Hope begins in the dark, the stubborn hope that if you just show up and try to do the right thing, the dawn will come. You wait and watch and work. You don't give up, was quoted by Annie Lamott. Believing in this philosophy and connecting dots between life of a villager in Karjat, Gudiya Shah from Kalina, Anish Chaurasya, a taxi driver's son in Mumbai, and a schoolgirl from Dharavi. All they needed was an opportunity and a helping hand to rise and excel from their social strata for a sustainable future. Mahanagar Gas Limited has played the role of a catalyst, bridging the gap and fueling their journey from dreams to aspiration and success. Keeping the community at the forefront, MGL is committed to help build a sustainable future and a world for better living because we believe that opportunity for all is a basic right. Corporate social responsibility at MGL is an embedded belief synthesized in company's DNA. Our CSR activities are aligned with the core objective of enhancing the lives of deprived section of the population, ensuring sustainable ecosystem conducive to entrepreneurship and empowerment. Under the banner of MGL Sparsh, MGL aims to create a positive impact in areas of education, environment, health, and empowerment. Through its various interventions, MGL is touching and enhancing lives of around 1 lakh people. MGL's CSR initiatives are touching lives which are broadly focused on following thematic areas. MGL Vidya. MGL views education as one of the most robust tools to promote vertical socio-economic mobility. MGL Unnati, the flagship project under MGL Vidya, envisages 11 months residential training to meritorious students from economically weaker background. मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा बेटा इस लाइन में आए। तो CNG स्टेशन पे मेरे पापा को एक पैम्पलेट मिला था जिसमें MGL उन्नति सुपर 30 के बारे में था और पापा घर आए और मुझे इसके बारे में बताया। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ पे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के फैकल्टीज़ बैठे थे। उन्होंने इंडिविजुअली हमारा इंटरव्यू लिया। 2 घंटे का टेस्ट था, हमने वो दिया। फैकल्टीज़ जो थे वो एकदम बोल सकते हो मुंबई के बेस्ट फैकल्टीज़ थे। आज मैं IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग फिज़िक्स कर रहा हूँ। मैं 2nd ईयर में हूँ। IIT जो मेरे पापा का सपना था, मेरा सपना बना और इस सपने को साकार करने में MGL का पूरा योगदान रहा। Under MGL Vidya, MGL also provides infrastructure support to the various schools in the form of building classroom, providing school benches, toilet blocks, mini science center, equipping of pre-primary section of a municipal school, scholarship to ITI students, family strengthening programs, remedial education, mentoring and livelihood support to the parents. Education leads to the empowerment and MGL intervention focuses on giving wings to such dreams. MGL Saksham. Under this initiative, students in their adolescence are being empowered through remedial education, counseling, scholarships and entrepreneurship. शादी से पहले मुझे पार्लर सीखने का बहुत शौक था मगर सीख नहीं पाई थी मैं। फिर शादी होने के बाद में 3 साल के बाद फिर इस डॉन बॉस्को संस्था आई। जब मैंने सुना कि फ्री में हो रहा है और मेरी ख्वाहिश भी है इसको सीखने की, वहाँ से जब आगे सीखे फिर मैंने ये सोचा कि भी मैं अपना खुद का क्यों नहीं करूँ कुछ चीज़। तो आज मैंने अपना एक खुद का पार्लर डाल लिया। मेरे स्टूडेंट लोग जो मेरे हाथ के नीचे रहते थे उन लोग सब भी अपने घर बैठे अच्छा पैसा कमा रही हैं। The project activity includes advanced skill training, anti-tobacco campaigns, distribution of sewing machine, promotion of self-help groups, street play, beauty care material and financial literacy. MGL considers skill development as a major tool for youth development. MGL Hunar. Riding on the national agenda of Kushal Bharat Kaushal Bharat, MGL through this initiative focuses on skill development of youth for a better India. The project focuses on providing training to youth in vocational trades like gas plumbing, welding and electrician. मेरे पिताजी एक दुकानदार है
तो मुझे उन्होंने 10वीं तक पढ़ाया है, तो वो मुझे आगे पढ़ा नहीं सकते थे। फिर मैंने MJ लूनर के बारे में सुना, इधर आया, इधर देखा, उसमें 4 ट्रेड थे, तो मैंने गैस प्लम्बिंग सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इधर 4 महीने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मुझे 1.5 महीने एंजल के इधर भेजा गया काम करने के लिए, एंजल के साइट पे। इधर के सेंटर के 2 बच्चे मेरे पास काम करते हैं और मैं इस जगह पे हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको भी इस जगह पे लाना चाहता हूँ। और मेरा घर भी चलता है और मेरा एक छोटा भाई भी है। इसको मैं अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सका तो मेरे आगे से वो अभी पढ़ रहा है। While taking care of education, empowerment, and skill development, MGL also focuses on health as one of its most important interventions. MGL, through this initiative, has provided safe drinking water in remote villages of Raigad and Palghar district through Nal Pani Yojana. आम्हाला पाणी कमीत कमी 2 ते 3 किलोमीटर आणावं लागायचं. असं गर्भवती महिला आणि असं खोल दर आहे, तिथून लय खड्डा आहेत, रस्ता नाही, काय नाही. पाण्याचं अजिबात आम्हाला पाणी कधीच भेटलं नाही. एवढे वर्ष झाली पण पाण्याचं कधीच सोच म्हणून आम्हाला आलंच नाही. लोक आम्हाला एक करावं लागलं, बोलतो अजिबात नाही. गावात तर पाणी कधीच येऊ शकत नाही. आमची पिढीनी पिढी गेली. 150 लोक इथं येऊन पाणी भरतात. 700 ते 800 लोक पाणी पितात. MGL enhanced life of children of sex worker and provided financial support for upgradation of Holy Family Hospital. Midday meals and health checkups camp were also organized under this initiative. MGL's core business premises is contributing for environment and CSR efforts supplement in that direction too. MGL Haryali focuses on environment, promoting the national agenda of Swachh Bharat for a clean India. MGL through this initiative has installed 200 litter bins in and around Panvel in the Raigad district. Through this intervention, 100 solar street lights have also been installed. Enhancing the environment of various communities, MGL also has envisaged intervention for rural development through MGL Vikas. 6 villages in Sudhagar Taluka of Raigad district are being supported under MGL Vikas. It is an integrated model village development program, including school infrastructure upgrade, support classes, Balwadi upgradation, environment protection, empowerment of youth, enhancing community infrastructure, strengthening local governance institution, etc. Our CSR work has won us awards and external recognition. Some of the prestigious CSR awards won by us are Golden Peacock, NBT and Middle East Awards. For MGL, our biggest reward as a brand is witnessing success of the people who fought against all odds to rise and excel. We feel deeply gratified that we could be the catalyst in their journey from struggle to hope in their pursuit of success.